Okay, let's do a normal, simple prayer. So before we start anything, we pray now. So in every religion, we pray first, correct? So just put your hands on the heart chakra like this. Here is your center of the chest is the heart chakra. Just say in your mind, God, we humbly invoke for your divine guidance, help and divine protection to learn and understand the concept of pranic healing in best of the best way. हे प्रभु परम कृपालु परमेश्वर, हम प्राणिक हीलिंग के बारे में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। उस दौरान आपके दिव्य ज्ञान, प्रेम और मार्गदर्शन की आवश्यकता हमें दीजिए। आपका खूब खूब आभार। Thank you. Open your eyes. Okay, welcome to the session on pranic healing. So my name is Shalin Bhagat and I am from Mumbai. Okay, so first of all, my name is Shalin Bhagat and I am from Mumbai, Borivali West. And I am a trainer to teach various courses in pranic healing. Since last 26 years, I am in pranic healing and I am teacher since 25 years. And I am a trustee of Yog Vidya Pranic Healing Foundation Trust of Maharashtra, Mumbai North. मेरा नाम शालिन भगत है, मैं बोरीवली वेस्ट मुंबई से हूँ और योग विद्या प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई नॉर्थ का ट्रस्टी हूँ। प्राणिक हीलिंग में करीबन 26 साल हो गए मुझे और 25 साल से मैं अलग अलग कोर्सेज जो प्राणिक हीलिंग में ऑफर करते हैं उसका मैं ट्रेनर हूँ। थैंक यू फॉर दिस कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस सेशन। Okay, now let's understand the concept of pranic healing. Now, before that, we start further. Let me share a PowerPoint presentation with you, where I would like to show the picture of my Guru. मैं गुरु जी का मेरा पिक्चर दिखाना चाहता हूँ. He is a Grandmaster Joa Koksui. So, Grandmaster means Guru. In China and other parts of world, they call Grandmaster. You must have heard about Grandmaster in chess. Chess में भी सुना होगा. So he's a guru who is the founder of modern pranic healing and arhatic yoga. Okay, pranic healing. So pranic healing, this is an ancient science. He did research for 23 years. After 23 years of research, in 1987, it was offered and to the general public. The person who doesn't have any knowledge about medical science can learn and understand and practice. गुरुजी ने 23 साल के रिसर्च के बाद 1987 में पहली बार प्राणिक हीलिंग इंट्रोड्यूस किया जनरल पब्लिक को. ओके, एक बुक है जिनका नाम है मिरेकल्स थ्रू प्राणिक हीलिंग प्राचीन कला और विज्ञान. पहले नाम ये था, एन एंशिएंट साइंस एंड आर्ट ऑफ प्राणिक हीलिंग. हियर नाउ गुरुजी 2007 में उनका देहांत हो गया. ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइसेंस प्राप्त होते हैं फ्रॉम मनीला और ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह पर प्राणिक हीलिंग के करीबन 170 कंट्रीज में अब तक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ गुरु वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी वी नीड टू अंडरस्टैंड सम अदर कंसेप्ट्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. हम ऊर्जा का कंसेप्ट समझे उसके पहले हमें कुछ और समझना पड़ेगा. So let's understand this. So दोनों हाथ ऐसे रखेंगे and can you move your fingers and say I am moving my fingers. So obviously what you are doing, you are moving your fingers. आप अपनी उंगलियां घुमा रहे हैं, right? Okay. English में you will say I am moving my fingers. हिंदी में मैं अपनी उंगलियां हिला रहा हूं. Okay, can you move your neck? If you move your neck, what you will say, I am moving my neck. मैं अपनी गर्दन घुमा रहा हूं. करेक्ट. नाउ सो हु इज मूविंग द नेक? आई एम. हु इज मूविंग द फिंगर्स? आई एम. सो सपोज इफ आई मूव द होल बॉडी, व्हाट आई विल से? अगर मैं पूरा बॉडी घुमाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम मूविंग माई बॉडी. मैं अपना शरीर घुमा रहा हूं. सो सिंपली मीन्स आई एम इज द मूवर ऑफ द बॉडी. उसका साफ मतलब हो गया कि जो मैं है वो शरीर को घुमा रहा है. एंड दैट आई एम और मैं इज कॉल्ड द सोल, और इन हिंदुइज्म वी कॉल जीवात्मा. आई एम जिसका नाम है
द सोल, जिसको हम हिंदुइज्म में क्या बोलते हैं, जीवात्मा। क्यों जीवात्मा बोलते हैं? व्हाई वी से जीवात्मा? आत्मा जिसने शरीर धारण किया है, आत्मा जिसने जीव यानी शरीर ऑक्यूपाई किया है, धारण किया है, सो इट इज कॉल्ड जीवात्मा। करेक्ट? ओके, नाउ सपोज, so let's understand the second one. So who is the mover of the body? You are the mover of the body. Correct? Let's understand this. Think of an apple. Okay? So suppose if I ask you to think of an apple, मैं मान लो आपको बोलूं एक एप्पल का थॉट क्रिएट करो. So what you are going to do? You know what we do? We use our mind to create the thought. Correct or not? हम अपने माइंड का इस्तेमाल करके एक विचार उत्पन्न करते हैं. करेक्ट? ओके, सो ऑब्वियसली हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस थॉट? इस थॉट का प्रोड्यूसर कौन है? मैं. राइट? आर यू दिस थॉट? क्या आप ये विचार हो? नो, यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ द थॉट. सेम वे, सपोज इफ यू प्रोड्यूस द थॉट, डू यू थिंक देयर वोंट बी एनी इमोशंस इन दैट? क्या आपको लगता है कि जब हम विचार प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें इमोशंस नहीं होंगे? ऑब्वियसली. सो सपोज इफ वी लाइक जनरली व्हेन वी आर एंग्री और सैड, व्हाट वी से, जब हम गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़ते हैं, तो क्या बोलते हैं? खुश होते हैं तो आई एम हैप्पी, आई एम सैड एंड आई एम एंग्री. नाउ थिंक अबाउट इट. यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ द इमोशन. हाउ कैन यू बी दैट इमोशंस? मैं कैसे बोल सकता हूं कि मैं दुखी हूं? मैं तो सोल हूं, मेरी भावना दुख भरी है. सो दैट दुख, दैट सैडनेस इज इमोशंस प्रोड्यूस माय मी. आई एम नॉट द इमोशंस. मैं वो इमोशंस नहीं हूं, इमोशंस मैंने प्रोड्यूस किए हैं. सो थॉट्स एंड इमोशंस आर द प्रोडक्ट ऑफ द सोल. विचार और भावनाएं सोल का प्रोडक्ट है. एज सिंपल एज दैट. नाउ रोज बरोज की जिंदगी में हम लोगों के साथ मिलते जुलते काम करते, अपना काम करते, बिजनेस करते, व्यवहार में रहते. वी क्रिएट लॉट्स ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस एवरी डे. इन आवर एवरीडे लाइफ वी मीट पीपल, वी वर्क, वी डू बिजनेस, एंड देन meeting with the people, dealing with the people, we create so many thoughts and emotions in a whole day. Now, according to psychological science, it says on an average, a human being generates 60,000 thoughts plus emotions in a day. एक दिन में एक आम आदमी एवरेज, ऑन एन एवरेज 60,000, 60,000 थॉट्स और इमोशंस क्रिएट करता है. Now we need to ask ourselves how it affects. If we create thoughts and emotion, how it affects, and if we create those thoughts and emotion, where do we store? अगर हम thoughts और emotions produce करते हैं तो उसे हम भरते कहाँ पर है? Where we store? So first, before going in that, let's understand this. What is the effect of thoughts and emotions? पहले विचारों का और भावनाओं का हम पर और दूसरे पर क्या असर होता है. तो how these thoughts and emotion affect us as well as other. So there was a well-renowned doctor, his name Dr. Masaru Emoto. He did one experiment. एक डॉक्टर मसारू इमोटो करके थे, जापान में बहुत ही नामचीन साइंटिस्ट. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट? लेट मी शो यू. So what he did, he took 3 glasses. उन्होंने 3 ग्लास लिए, पानी भरे. ओके, एंड देन वो तीनों में थोड़े थोड़े चावल भर दिया और पानी थोड़ा थोड़ा भर दिया. He took 3 glasses filled with water and put some rice into it. Now he kept this in one room where no one will come. एक कमरे में रख दिया जहां पर कोई नहीं आएगा. Clear? So he will enter the room, looking at the first glass, he will say thank you. रूम में आते ही पहले ग्लास को देख के बोलेंगे थैंक यू. He will move towards second glass. दूसरे ग्लास की तरफ जाएंगे. Then he will say you disgust me. तुमने मुझे निराश किया. And third glass, without saying, without looking at the glass, he will simply ignore and he moves out.
तीसरे ग्लास की तरफ न देखते थे, न कुछ बोलते थे, उसको इग्नोर करके चले जाते थे. Now, he did for a whole month. And as I said, there was no one in the room. The room was empty. कोई कमरे में नहीं था, रूम खाली था. रोज वो अंदर आएंगे, पहले क्लास की तरफ देख के बोलेंगे यू थैंक यू, दूसरे क्लास की तरफ यू डिस्कस मी, तीसरे क्लास को इग्नोर करके चले जाएंगे. आफ्टर 1 month, व्हाट वाज द रिजल्ट? एक महीने बाद क्या रिजल्ट हुआ? द रिजल्ट वाज दिस. Sorry. Yeah. So result is this, where he said, thank you to first class, the rice became more aromatic. मतलब खुशबू. आप सोचो, just think about it. The rice was in that glass of water for 1 month. Still the aroma of the rice was there. एक महीने तक वो चावल पानी में पड़े रहे, फिर भी उनकी सुगंध थी. ओके. दूसरे ग्लास को जो आप बोला था यू डिस्कस में, तुमने मुझे निराश किया था, निराश किया. the glass which he said, you discuss me, that was half of the rice were rotten. आधे चावल सड़ चुके थे. And the one which was completely ignored, जिसको completely ignore किया था, वो पूरा सड़ चुका था. उसमें राइस पूरे सड़ चुके थे. Now my dear friend, you tell me this. Now the question is, but sir, what is the effect of this on us? उससे हमारा क्या लेना देना? What is that? 70% in the human body is water. So if that water is affected by those thoughts and emotions, same, it will affect our system, our body. So whenever we say some positive words, our body will have that vibration. Whenever we will say negative words, it will have vibration. Even if we think positive, it will have a positive vibration. Even if we think negative, it will affect our system. And not only that, when we look towards other people like this glass, if we radiate negative thoughts or negative emotions, it will affect negatively. If we radiate positive, it will affect positively. जैसे ग्लास की तरह अगर हम किसी और के प्रति सकारात्मक पॉजिटिव विचार जनरेट करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स भेजेंगे, पॉजिटिव इमोशंस भेजेंगे, वैसा ही पॉजिटिव असर होगा. नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा. नाउ वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ, हमें अपने आप को पूछना है कि पूरे दिन के दौरान हम 60,000 में से कितने थॉट्स पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है रोज की जिंदगी में. थिंक अबाउट इट. ऑन एन एवरेज सोच लो, how many of you think that you have more than 55,000 positive thoughts in a day? How many of you think कि 55,000 है? Okay, चलो reasonable discount करते हैं. Let's say we are super positive people with 59,000 thoughts in a day is super positive. सोचो 59,000 thought. 1,000 थोड़ा माइनस वाले हैं. Okay, 1,000 thoughts are not that good. Now think about it. Every day it piles up. 1,000 विचार रोज pile up होते हैं ना. So where we store this? Where we store this? So here we store this. Just a moment. I will show you in the presentation. So we store just a moment. Just a moment. Yeah. We store in our system. So these are the energy centers called chakras. Here is the body and there is the energy body. So what is the meaning? Now, according to our science, yoga science, it is said we have energy body, which is called Abha Mandal in Hindi. Abha Mandal, Abha यानी ऊर्जा शरीर, सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता है. The energy body, which cannot be seen, it is called energy body or etheric body. Physical body and energy body interpenetrates each other. Physical body
और एनर्जी बॉडी एक दूसरे को भेदते हैं. सो एनर्जी बॉडी इज लाइक अ मोल्ड फॉर द फिजिकल बॉडी. ऊर्जा का शरीर हमारे शारीरिक शरीर के लिए एक मोल्ड की तरह है. ओके, सो वट एवर अफेक्ट एनर्जी बॉडी इट अफेक्ट फिजिकल बॉडी. वट एवर अफेक्ट फिजिकल बॉडी इट अफेक्ट्स एनर्जी बॉडी. जो ऊर्जा के शरीर पे असर होगा उसका असर शारीरिक शरीर पे होगा, जिसका शारीरिक पे होगा उसका ऊर्जा पे होगा. सो ऑन इन अवर physical body we have organs to function. Okay, on the energy body we have a chakras or energy centers called chakras in yoga system. Our saints and mahatmas were knowing about the science of this aura and chakras since thousands of years, centuries. हजारों सालों से ये जानते थे. In 1939 Dr. Simeon Davidovich Gillian he took photograph of this, and in that time, you know, it was invented by him and his wife. So they developed that camera with high speed photography, and they took the photograph, and there they found the luminous energy coming out of that plants, human being, animals, and then they gave the name as an aura. उन्होंने जो फोटोग्राफ लिए, उन्होंने ये देखा, ये आभा, उन्होंने इसको ऑरा का नाम दिया. It's called Gillian photography. Right nowadays we have a GDV camera available. Anyways, coming back to the point. So in general, whenever we have a thoughts and emotion, we feel in our aura. That is our like a storage. It's like our storage. Now, slowly, this energy from these chakras goes to the root in the body, and that becomes our belief system. हम रोज बरोज की जिंदगी में लोगों से जो भी देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, संपर्क में आते हैं, what we see, what we hear, what we smell, what we taste, all five senses record everything. And then this goes to the chakras, and in the deep, it becomes our belief. And then we start acting on this. So if it is positive, then positive. If it is negative, then negative. अगर ये positive होगा तो positive, negative होगा तो negative. So people get disease mainly due to what? व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है? खाना पीना गलत हो गया तो पड़ेगा, राइट? विचार गलत हो गए, भावनाएं गलत हो गई तो भी पड़ेगा. You know, so it is like this. Let me explain in other way. Think about it, that 1000 thoughts in a day multiply, you know, with your years you have lived up to now. सोचो आपने 1000 ही थॉट नेगेटिव बनाया, नकारात्मक इमोशंस है, नकारात्मक विचार है, 1000 में, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 60,000 में से. तो उससे 365 डेज और उसके साथ अपनी उम्र जोड़ लो, कितने हैं? How many thoughts, emotions are negative? How many of you have noticed that still you cannot forgive someone? आप में से कितने लोगों ने महसूस भी किया होगा कि आप अभी भी कुछ लोगों को माफ नहीं कर सकते अपने जीवन में, आप नहीं कर पा रहे हो. You want to, but you can't. You must have experienced certain negative feelings about some people, those who have made your life terrible. ऐसे भी लोग होंगे आपके जीवन में जिन्होंने आपके जीवन में दुख दिया है, आपको तकलीफ दी है, आपको नुकसान पहुंचाया है. We all had gone through that ups and downs in our life. हम सब यहाँ पर मौजूद है, सब लोगों ने अपने जिंदगी में ups and downs देखे ही है. Yes or no? And I mean, frankly speaking, we all have generated certain amount of negative thoughts and emotions. और कहीं ना कहीं हमने नकारात्मक विचार और नकारात्मक इमोशन उत्पन्न किए ही है. Multiply by 365 and multiply by the years we have lived, where we have stored in our this system. Did you clean? You ask yourself. अगर वो clean होता ना, तो ना आपको physical ailment होता, ना आपको कोई प्रकार का psychological ailment होगा. Sir, what are you saying? I am not psycho. My dear friend, mostly people when hear about the psychological ailment, the immediate reaction is I am not psycho. Nobody is psycho. There is a psychological disorder. There is a stress, it is psychological disorder. तनाव है, psychological disorder है. गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है, वो भी एक प्रकार का psychological disorder है. धीरज है ही नहीं, वो भी एक psychological disorder. So there are so many psychological disorder. Sometimes we think it's okay to get angry. Sometimes we think it is okay to throw the things. Sometimes we think that it's okay to shout. कभी कभी सामान्य लगता है कि गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, चीजें फेंकना सामान्य है. तनाव सामान्य है, जोर से बोलना वो तो कोई बड़ी बात नहीं. You know, these are all psychological disorder, whether we accept it or not.
हम उसे एक्सेप्ट करें न करें। डर, किसी चीज का डर, किसी चीज का डर कि कल बिजनेस क्या होगा, किसी चीज का डर कि कोरोना जैसी वापस परिस्थिति ना आ जाए। देयर इज अ फियर दैट इट शुड नॉट बी लाइक नेक्स्ट, हु नोज द कोरोना मे कम बैक, who knows that the market will fall down, who knows about the share market. All this can also bring fear, can anxiety. ये चीजें भी हमारे अंदर तनाव ला सकती है, ये चीजें हमें तकलीफ ला सकती है, हमें तनाव तो लाएगी, हमारी चिंता बढ़ाएगी। करेक्ट? नाउ थिंक अबाउट इट दैट सपोज यू हैव अ हाउस। मान लो एक आपका घर है जो 1 महीने से बंद पड़ा है। 1 month, it's closed. Nobody has come in the room. 1 month it was closed. If you suddenly go in that house after 1 month, what you will find? 1 महीने बाद उस घर में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? फर्श पे सब मट्टी धूल पड़ा होगा, right or not? There would be dust on the floor. The wall would be also having some webs, maybe on the fan or in the corner of the room, right? Corner of the room में या पंखे पे जाले आ गए, मट्टी है. Yes or no? So if you clean after 1 month, maybe in 1 day you can clean, na? Some have several hours. कुछ घंटों में clean कर सकते हो. Fantastic. Now think about it. You had entered this room or house after 6 months. Where already 2 seasons passed. सोचो 6 महीने बाद घर में गए, जहां पर 2 सीजन ऑलरेडी पास हो चुका है. And when monsoon also passed. ऐसा था ना, बारिश की मौसम वो पास हो चुकी है. नाउ थिंक अबाउट इट, फॉर 6 months यू डिडंट ओपन द हाउस. 6 महीने तक आपने घर खोला ही नहीं है. नाउ वंस यू एंटर द रूम, व्हाट यू विल फाइंड? मोस्टली वी विल फाइंड दैट स्मेल, डर्टी स्मेल. हमें डर्टी स्मेल आएगी, राइट? सेकंड, वी विल आल्सो फाइंड द डस्ट ऑन द फ्लोर, लॉट ऑफ डस्ट, बहुत सारी धूल मिट्टी. व्हाट अबाउट द वॉल? वॉल में यू मे फाइंड फंगस ऑन द वॉल. ऐसा भी हो सकता है कि दीवार पे वो फंगस आ जाए. देयर विल बी सेवरल वेब्स नाउ. यस और नो? अमेजिंग. नाउ थिंक अबाउट इट. वी ट्राई टू क्लीन दिस बाय आवर ओन. 6 महीने बाद घर पे जाने के बाद ये परिस्थिति में हम खुद उसको साफ करें. डू यू रियली थिंक दैट यू विल एबल टू डू इट? एंड mostly in that 6 months, don't you think that your furniture, your wooden furniture is affected? There can be a termite. It has already eaten some wood. Yes, smelling, right? And don't you think there would be already insect inside? Insect bhi aa chuke hoge. Yes, correct. Do you think that you will able to clean that house in a 1 day? And will you able to do it by your own? क्या आपको लगता है कि आप एक दिन में उसको साफ कर पाओगे? क्या आपको लगता है कि आप धूल मिट्टी साफ करके एकदम फर्श चमका सकते हो? क्या आपको लगता है, do you think that you will able to clean the wall and the fungus, everything will be cleansed? Don't you think while cleaning the fungus, the color will be spoiled? लगता नहीं है कि वो फंगस साफ करते करते कलर स्पॉइल हो जाएगा? Will you able to touch the termite and spray and clean and repair the wood? लगता है कि आप उस दीमक को निकाल के उसको साफ करके वहां पर पेस्ट करके नया फर्नीचर को रिपेयरिंग कर सकते हो? डू यू नो दैट? इफ एयर कंडीशन नॉट वर्किंग, विल यू एबल टू रिपेयर? आप रिपेयर कर पाओगे? नहीं. पंखा बराबर नहीं चला, आवाज कर रहा है, ऑयलिंग ने विल यू एबल टू डू ऑयलिंग? मे बी, मे नॉट बी. मे बी यस, क्लीनिंग. सो इफ यू डोंट नो व्हाट यू नीड, you need several people to do this. आपको कुछ लोग चाहिए जो ये सब काम कर पाए. Right or not? Fantastic. Now, do you really think that within 1 day they will able to do everything? नहीं कर पाएंगे एक दिन में. Practical नहीं है. Even if you appoint 5 people, they will not able to complete that task. Why? Because there is certain rules ना, कि हम दीवार को साफ करेंगे, उस पे लाबी लगाएंगे, उसको पेंट लगाएंगे, उसको 3 हाथ मारेंगे कलर का. वुडन फर्नीचर, इट विल बी क्लेंस्ड, इट विल बी पॉलिश्ड, इट विल बी रीपॉलिश्ड. यस और नो? ऑयलिंग, एयर कंडीशन, दिस गाय विल कम, रिपेयर, क्लीन, वॉश, रीइंस्टॉल, राइट? इट मे टेक 7-10 days. यस और नो?
So my dear friends, if you cannot clean negative thoughts and emotions for 6 months, 7 months, and for 10 years, what do you think? Like, from our house, we get smell, we are going to smell. Sir, what are you saying? I am applying deodorant every day. My dear friend, not that smell. That smell will be aware of our behavior. वो स्मेल और कुछ नहीं होगा, वो हमारा बिहेवियर होगा. हम कैसे बात करेंगे, कैसे पेश आएंगे, जो बात में वो भाषा निकलती है ना, द वर्ड्स वी यूज, दैट इज दैट स्मेल. The emotions which come out in the form of that anger and frustration, that is that smell. And that would be smelled by people. And they will judge us. Hey, this guy is so negative. This guy is angry, irritated person. That is smell. By getting the smell, we can identify that this house is dirty. Same way, looking at us, angry, frustrated, irritated, people will move away from us. If you don't know how to clean, you will ask healer to do it. If you even have, if you even have a 50 lakhs in your pocket, do you think healer will able to do in one day? आपको लगता है 50 लाख रुपया लेके आएंगे, healer को एक दिन में करेगा? Just think about it. If you have a 50 lakhs rupees in your pocket, and would you like to change the whole interior of the house, do you think it is possible to clean in a one day, 1 month? Not possible. Even if you renovate the whole house, it will take at least 6-7 months or 1 year, because you want that fantastic interior. You want amazing shine in your house, lighting. Wow. Even if you have a 50 lakhs in your pocket, it will take 6-7 months or 1 year. My dear friends, even if you have a super money, you try to heal yourself in a 1 day, 2 day, 5 day, not possible. Even if you appoint healer, it's not that easy. It will take time. So, and just think about it, you already have done fantastic. You have done, let's say you have appointed healer has done 6 months, 3 months, 2 months healing. You are okay. Wow, physically, psychologically, amazing guy. Your house is, wow, super lighting. Don't you think after that you need servicing? Don't you think you will need sweeper? Don't you think you will need the AC servicing department? Don't you think you will need a cleaner, helper everywhere? Kitchen work cleaner? Yes or no? If you don't do it, what will happen after 1 year again? Same. उस घर को सजाने के बाद भी हमें रोज एक भाई चाहिए जो हमारा घर साफ कर सके. हमें वो एक व्यक्ति चाहिए जो हमेशा रेगुलर में आके हमारा एसी को रिपेयर करके उसको, सॉरी रिपेयर नहीं, सर्विस करके जाए. पंखे के जाले हम निकालते हैं, ऑयलिंग करते हैं, दिवाली पे हम साफ सफाई रेगुलर चल रहा है. राइट और नॉट? यस, वी नीड दैट. We need. So if you cannot do by yourself, you will appoint somebody, right? So think about it. How many times that healer will come and heal you? It is our responsibility not to allow that window to get the dust in. हमारी responsibility है उस window को बंद करें जहां से वो धूल मट्टी आ रही है. Or even certain windows, this will remain open. It is going to come. Our duty to clean it every day. So we need self-healing every day. हमारे इस कंटेनर को साफ करने की बहुत जरूरी है, फिजिकल लेवल पर, साइकोलॉजिकल. इफ इट इज नॉट, देन द बॉडी विल हैव प्रॉब्लम. लाइक just think about it. When it's a summer time, and if your AC is not working, what you will do? You will call this AC service guy once. If he doesn't pick, you call twice. If he doesn't pick, you will call thrice. AC वाला उठाएगा ना, बार बार फोन करेगा. Yes or no? Why? Because you want that cool atmosphere to work, right? My dear friend, we also need to keep our head cool. We need to take out our anger and frustration on a daily basis, because when we deal with the people, it is going to happen. But the meditation and that energy and breathing exercise will keep ourselves calm with lot of patience. We need some spatial energy to work on our system, work on our behavior, work on our anger, work on our system, work on our mentality, thinking. We need to remove old program. We all are happy to operate the smartphone. But are we smart enough to upgrade our ideas? We need to ask ourselves. हमें अपने आप को पूछना है कि मुझे स्मार्टफोन तो बहुत पसंद है,
और आइडियाज, स्मार्ट आइडियाज किसी का है वो मैंने अडॉप्ट किए. Am I flexible to have that ideas to implement? World as a new ideas come up. Are we still there? We need to upgrade our system. We need to upgrade our business. We need to upgrade our style of working. Those who are in IT industry, those who are in several industry, every time they know that new people are coming, they are upgraded, they are still behind. So in business also, just think about coffee. Nowadays, you have a heart on the coffee. It's a new ideas. Cake, designer cake, new ideas. Nobody has thought of that. We will have an introduction of Pranic on Zoom. It's a new idea. So there are several things upgraded. We need to purify our system. We need to upgrade our system. So in Pranic healing, we teach basic pranic healing, advanced pranic healing, and psychotherapy. These are essential for someone to purify themselves, because who is going to help every day? And if you have a knowledge, you can clean the negative energies within your house, which is bothering you. The thoughts and emotions released so many times in a day. For so many years, that has been released in your house, in your office, and you are working in that same atmosphere. सोच लो कि कितने नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं आपने उस ऑफिस में छोड़े हैं, उस घर में छोड़े, उस बेडरूम में छोड़े, उस हॉल में छोड़े, जहां पर आपने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, एंड क्या क्या प्रोग्राम देखे हैं. Just think about so many programs watched by you where you have created energy of anger, fear, anxiety, stress, looking at those programs. How many times you had seen that attack of 9/11 and 26/11, you got frustrated looking at those things because those frustration and irritation was released in our house. Did we clean it? No. So we need the science to understand that energy and to purify the system. Unless or until we don't go in that depth, we will not able to. जब तक हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, नहीं होगा. It is not the story of one day you learn pranic healing and then, oh, wow, it was good. No, my dear friends. It's like a university. Pranic healing is like a university. Our guru's mission is to have one pranic healer in every family. But sir, don't you think that this science, which is an ancient science, rediscovered by your Guruji, has to be offered free? पहले के जमाने में ये सब संत महात्मा के तो फ्री में देना चाहिए. My dear friends, you need to ask yourself, there was an era when these gurus were taken care of, their entire need was taken care of by the king. गुरु होते थे ना जो शिक्षा सबको देते थे, उनकी सारी जरूरतों का पूरा कौन करता था? राजा. आज अब वो राजा राज रहा नहीं है. Right or not? Nowadays, if I want to buy air condition, I have to pay money. If I want to buy a house, I have to pay money. If I want my child to go for good education in the school, I have to pay money. I can't say, hey, you send, I will teach you pranic healing. No, you come, I will heal, you give me air condition. Because every time now is the money is exchanged. That's it. Nothing else like that. So some people have that, in mind that no, this science should be offered free. The Guruji offered this free. Guruji ने इसको free दिया था, but people didn't value it. So Guruji started, okay, we need to charge something so that people will value it. That was the reason behind it. Clear? So if you are interested in learning this science, then please contact your nearby center. Or if you are in Mumbai and interested in learning this in Borivali West, you can come. अगर आप बोरीवली में रहते हो तो ये सैटरडे संडे ये क्लास हो रहा है, बेसिक क्लास. Okay, and then you will learn advanced. I will give you the details. The course fee is 7,000 rupees with food, tea, coffee, book, CD, certificate, all inclusive. And we have several follow-up sessions over Zoom. So if you don't come to center, no problem. At least on Zoom, we'll also do the follow-up with the recorded sessions so that you can do easy practice. Because some of you, so those who are working, because we also have the students, those who are working, जो वर्किंग है उनको नहीं जमता है, हाउस वाइफ है वो अपने काम से जल्दी सेंटर पे नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम. वी हैव अ फॉलो अप विद द रिकॉर्डेड सेशंस so that you don't miss out on your practice. Clear? So thank you very much for joining. Wish you all happy time, lucky time. Thank you for listening and joining us. I'm very happy
Thank you, thank you, thank you. You already have my pamphlet with you. My number is 98200808004. 98200808004. So I think in the pamphlet it is already given. If you don't have, you just message me. Even on the Google, if you type Shalin Bhagat, name will come. 98200808004 will come. Okay. Thank you for joining. Wish you all happy and lucky time. Thank you.